and waves. Okay, this one your last unit of the class 11th physics, oscillation and wave. First we will discuss what is oscillation, beta. Then oscillation is a type of motion. We discussed already there is a three type of the motion. In your second unit we discussed the three type of the motion. First one your translatory linear motion, and second one you are discussed, beta, that is equal to, first one we discussed types of motion. So first one type your translatory मोशन या फिर लीनियर मोशन. ओके, सेकंड वन दैट इज रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन. एंड थर्ड वन टाइप ऑफ द मोशन इज आवर ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट? ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनल मोशन, वी कैन से वाइब्रेशनल मोशन. तो बेटा हमारे टाइप ऑफ मोशन होते हैं, थ्री टाइप मोशन होता है. फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज अ लीनियर मोशन, वी कैन से बॉडी क्या करती है, वन डायमेंशन में मूव करती है, कैन बी देयर टू डायमेंशन प्लेन ऑल्सो, देन वी विल कॉल इट लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन. नेक्स्ट वन योर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ फिक्स एक्सिस, then we will call it rotational motion. Okay, if your one axis will be fixed, then we will call it rotation. If complete body will be revolve around a one point, then we will call it circular motion. So our third type of the motion came, this one our oscillatory vibration motion. Today we will discuss. So what is oscillatory motion, translatory motion? So this one our, here see, मोशन इज विद ऑसिलेटरी मोशन इफ बॉडी विल बी मूव एंड टू एंड फ्रो मोशन. जब कोई भी बॉडी क्या है टू और फ्रो मोशन में मूव करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस वन वी विल कॉल इट ऑसिलेशन या फिर यू कैन सी देयर वाइब्रेशनल मोशन. इसको हम क्या कह सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं बेटा, वाइब्रेशनल मोशन. ओके, जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है, दैट इज मोशन योर ऑसिलेटरी. एंड फिक्स पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट, दिस वन इज नोन एज द मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. हियर पिक्चर यू कैन से बेटा लाइक दिस वन चेयर वी आर टेकिंग. चेयर क्या करती है, एक मीन पोजीशन में फिक्स है, जैसे चेयर आगे जाएगी पीछे जाएगी. दिस टाइप ऑफ द चेयर ऑल्सो फॉलो योर ऑसिलेटरी मोशन, कि मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करिए, एक बार इधर जा रही है एक बार इधर जा रही है. सेम हेयर पेंडुलम विच वी आर टेकिंग, तो एक बार स्ट्राइक करेंगे, दिस बॉल्स विल गो इन दिस डायरेक्शन, देन आफ्टर कम बैक ऑन द मीन पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट से वापस मीन पे आएगी. सो हियर वी कैन से एनी पेंडुलम वी आर टेकिंग बेटा. सो दिस वन पेंडुलम, हियर वी विल अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. So as we will apply force on it, then it will be go in this one direction. So as coming back along this one, then it will go in this one direction. क्लियर? तो जिस फिक्स पोजीशन के अलोंग ये इधर उधर जाते हैं उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. दैट इज अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट, कि इस फिक्स पॉइंट के अलोंग जब बॉडी ऑसिलेट करती इधर उधर जाती है, दैट वी विल कॉल इट मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, सो एज दिस वन पेंडुलम विल गो, फोर्स अगर अप्लाई करे, इधर से बॉडी क्या इधर जाएगी तो इट विल रीच हियर. एज वी विल अप्लाई फोर्स ऑन इट, देन इट विल गो इन दिस वन डायरेक्शन. It will reach on this one side maximum position, maximum displacement. So this one position we will call it what? Extreme position. एक्सट्रीम पोजीशन. तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो टाइप की पोजीशन होती है, एक तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड विल बी एक्सट्रीम. एक्सट्रीम का मीनिंग ही क्या होता है, मैक्सिमम हाइट तक, कि अगर एक बॉडी है कि इधर जा रही मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, हाइट पे जा, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, जब तक क्या है वेलोसिटी एक्ट होगी. एज वेलोसिटी ऑन दिस वन पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0. इस बोब के ऊपर, व्हाट इज दिस वन इज अ बोब ऑफ द पेंडुलम. ओके, एज वेलोसिटी ऑफ द ऑन द बोब विल बिकम्स 0, देन इट विल कम बैक अगेन अलोंग द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के अलोंग क्या आएगी, वापस आ जाएगी, यहाँ से फिर इधर जाएगी, इधर से क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, एक्सट्रीम
एक्सट्रीम से फिर से वापस आएगी मीन पोजीशन के ऊपर, तो मीन पोजीशन के अलोंग क्या है, ये इधर उधर रोटेट करती है, ओके, ऑसिलेट करती है, नॉट रोटेट, इट विल बी ऑसिलेटिंग अलोंग द मीन पोजीशन, सो दिस वन इज अ ऑसिलेशन एंड दिस वन मोशन इज बेटा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मीनिंग ही यही होता है कि एक बार इधर जा रही है, 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 मीन पोजीशन के अलोंग, क्लियर। So this type of the to and fro motion is known as the oscillatory motion. See, you can see in this one picture कि जैसे हम इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉल क्या है, इधर की तरफ जाएगी, ओके, एज रिमूव दिस वन फोर्स, तो यहाँ से क्या है, बॉल वापस स्ट्राइक करेगी, तो वापस से फिर से वापस जाएगी, तो ये फिक्स मीन पोजीशन के अलोंग क्या ये बॉल इधर उधर घूमती रहती है। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन इज योर ऑसिलेटरी। सेम हेयर, दिस वन चेयर हैविंग मीन पोजीशन, दिस वन, तो मीन पोजीशन से इधर की तरफ क्या जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इस तरीके से क्या है, ये ऑसिलेट करती है। सो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द पॉइंट आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन एंड द वाइब्रेशनल मोशन, ओके, वाइब्रेटिंग, बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो भी क्या होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है कि फिक्स पोजीशन के अलोंग क्या कर रही, बॉडी वाइब्रेट कर रही है। I hope you understood बेटा what is oscillatory motion. Okay, in guitar also we can say, गिटार भी क्या है, एक एग्जांपल GUITAR, गिटार, गिटार के अंदर भी क्या है बेटा, स्ट्रिंग, जैसे हम उनको वायर्स को टच करते हैं, as we will apply force then they will go in one direction, then after come back along mean position they will go the another direction. तो mean position के along क्या है, वो वायर्स, गिटार्स के वायर है क्या है, वाइब्रेट करते रहते हैं, that vibration is known as the oscillatory vibration motion. ओके, स्प्रिंग के अंदर भी, स्प्रिंग भी बेटा आपका एग्जांपल हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन का। स्प्रिंग के अंदर भी क्या करता है, स्प्रिंग को ऊपर फोर्स लगाएंगे, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसके ऊपर, वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर से वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से वाइब्रेशन होती रहती है स्प्रिंग के अंदर। सो स्प्रिंग देयर मोशन आल्सो यू कैन से वाइब्रेशन ऑसिलेटरी मोशन। सो नेक्स्ट ईयर पीरियोडिक मोशन, हमारे पास दो टाइप के मोशन है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी, हैविंग स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कह रहा है that its process is take place repeat itself after a regular interval of time, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता रहता है, वो रिपीटिशन होती रहती है, that we will call it periodic motion. You can say that is clock. Okay, clock we can say example here, you can see picture of this one, बेटा हमेशा क्या है, एक कंप्लीट राउंड लेगी निडल, एक फिक्स इंटरवल पे क्या है, कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। सो पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन इन विच बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम, रिपीटेड इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन कॉल इट पीरियोडिक मोशन। कि एक फिक्स के इंटरवल ऑफ, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या क्या है, खुद के पाथ को रिपीट करती है। सो दिस वन इज टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। हियर वी कैन से क्लॉक, क्लॉक क्या, क्लॉक की जो निडल है बेटा एक फिक्स इंटरवल 12 पे आएगी, 12 से कंप्लीट एक राउंड लेगी, फिर से 12 पे आएगी, फिर से कंप्लीट राउंड लेगी, हर एक पाथ क्या है, एक सेम इंटरवल के बाद क्या रिपीट होगा। सो दिस टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज अ पीरियोडिक। Another example you can say revolution of the earth also, revolution of earth, ओके, अर्थ का रिवॉल्यूशन, कि अर्थ जो रिवॉल्व करे सन के चारों तरफ, सन इज देयर, अर्थ इज देयर, देन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि सन जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रही है बेटा, 365 डेज के बाद वो क्या है, खुद को रिपीट करेगी। ओके, 365 दिन बाद क्या है, अर्थ अपना राउंड फिर से लगाएगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर से लगाएगी, आफ्टर 365 डेज अगेन इट विल कम बैक, तो रिवॉल्व करती जा रही है अलोंग अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अलोंग ये रिपीट करती जा रही है अपने पाथ। सो रिपीटेशन विल बी देयर आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। Okay, so this type of the motion is known as the periodic motion. I hope you understood beta oscillation and periodic motion. Oscillation is a to and fro motion. Okay, to and fro motion के अंदर बेटा इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी रिपीट तो कर रही है अपना पाथ, बट फिक्स इंटरवल नहीं है, धीरे धीरे क्या है टाइम डिक्रीज होता जाएगा, देयर इज अ नॉट फिक्स इंटरवल। ओके, इसके अंदर आपका फिक्स इंटरवल है, फिक्स इंटरवल के बाद क्या बॉडी अपना पाथ रिपीट करेगी। सो दिस वन योर पीरियोडिक मोशन। Now next our some terms related to our this one oscillatory motion, you can say characteristics of the oscillatory motion. These are the characteristics of your oscillatory motion. Then how we can write, first our displacement of the periodic motion.
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो हमारे जो मोशन है बेटा ऑसिलेटरी मोशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ द वेव। वेव की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वन। तो इस वेव फॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओनली, विच टाइप ऑफ द वेव, दैट इज योर साइन वेव और कोसाइन वेव। सो दिस वन आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी योर एक्स एंड वाई, एनीथिंग यू कैन टेक देयर। दिस वन योर एक्स वी कैन राइट देयर x इक्वल टू, okay, and this one which type of the wave is there, sine wave, we can write there sine, and theta is the angle by which angle it is moving there. Then after that here we will write there of what is the magnitude of this one here, magnitude this one our mean position से maximum कितना magnitude ये displace करेगी, कि main position से कितना displacement हो रहा है, that we will write here. Okay, so this one equation is indicating here displacement equation. If here having some phase also, so that's why phase we can write there plus minus 5 there. Okay, this one 5 will be symbol of the phase. Later on we will discuss what is phase and phase difference. So like this one we can represent of our wave, of our oscillation motion in form of the this one your function. Okay, ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. See here our your there this one how we can writing there, any bob is there, pendulum is there. Okay, तो bob क्या करा, इधर से इधर जाएगा, यहाँ से क्या वापस डिस्प्लेस होएगा मीन पोजीशन पे, इधर से क्या है फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा. इसी टाइप के ऑसिलेशन को अगर हम वेव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंटिंग दिस वन टाइप ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ द वेव. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओके, मीन पोजीशन से हमारा बोब स्टार्ट होगा. मीन पोजीशन इज दिस वन. Then after the mean position it will go up to the extreme position, maximum position, we can say amplitude of that wave. So increasing our motion up to the extreme, let this one extreme position, then after extreme position it will come back along the mean position. mean position पे क्या वापस आ जाएगा, extreme position के बाद क्या mean position पे वापस आ गया. ओके, फिर से मीन पोजीशन पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में. मीन पोजीशन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक एक्वायर करने के बाद फिर से वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैक्सिमम हाइट एक्वायर करने के बाद फिर से वापस कहाँ है, मीन पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, सो दिस वन इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस वन वेव. So this formation of the wave we can representing like this one, that is x is displacement that we are taking there. So here type of the wave we can write there sine wave, and sine we can write there theta, and here we can write there amplitude of this one. If here will be amplitude 2, then we can write there 2 only. Okay, if here 2 meter is there, then 3 meter is there, then we can write there 2, 3, 4 like this one. I hope you can understood beta how you can represent this one displacement. So we can read this one displacement x in SHM at t time, then we can write this one. अभी मैंने बताया कि थीटा विल बी देयर. अब थीटा से ओमेगा टी कहाँ से आ गया, ओमेगा टी आता है बेटा थीटा इक्वल टू योर थीटा वी नो अबाउट दिस वन, दैट इज इक्वल टू एंगुलर ओमेगा वी कैन राइट देयर थीटा बाई टी. Angular displacement per unit time, that is known as omega only. So by using this one then theta we can write there omega t. यहाँ से आपका थीटा क्या है, ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ईयर phi is our phase difference. Okay, so x equal to a sin omega t plus phi, where 3 constants are there, a, omega and phi. यहाँ पे 3 constant है, a, omega and phi. We will discuss these terms बेटा. These are the characteristics of the SHM. ये different characteristics है SHM की. SHM means simple harmonic motion. जो आपका ये motion follow कर रहा है to and fro motion, इसी को क्या बोलते हैं, to simple harmonic motion. जो harmonic motion equation को follow करता है. जो harmonic equation को follow नहीं करता, then we will call it non-harmonic. So these are the characteristics of your oscillation simple harmonic A, omega and T. So they distinguish one SHM from the another. Also can be described by the cosine function also. The cos function में भी हम इसको explain कर सकते हैं. If our wave will be like this one,
starting from the extreme to the mean, like this one will be there. So this type of the wave we can, this one our displacement and your time graph is there. डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिप्रेजेंटेशन को हम y की फॉर्म में भी कोस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल. ओके, डेल इज आवर फेज and your cos function will be there, that if your wave is starting from the extreme position, then later on it is going on the mean position. Next, our amplitude. Amplitude is the maximum height from the mean position. This one, maximum height from the mean position, is known as the amplitude. Then amplitude can be equal to your maximum displacement also. Amplitude we can say maximum displacement also. So displacement of the oscillating particle, यहाँ से बॉडी क्या करे, डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेस होते हुए तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है, तो मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट होती है उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. एम्पलीट्यूड को भी हम क्या है मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लाइक दिस वन. योर डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट इज मीटर ओनली, सो एम्पलीट्यूड SI यूनिट आल्सो मीटर ओनली. So at an instant is equal to change in its position vector during that time. The maximum value of the displacement, maximum value क्या कह रहा है ये, maximum value displacement की maximum value in an oscillatory motion on either side of the mean position is called as the डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और सिंपल एम्पलीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से किसी भी हाइट के, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वो भी यहाँ से जितना भी अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. मीन पोजीशन, दिस वन आवर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जितना भी चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कि इनिशियली इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, सो दिस वन योर चेंज इज टेक प्लेस, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, सिंपल एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड यू कैन से x, okay, x will be maximum, then your a will be there, x maximum, so unit we can write there meter only. Next our term is time period. अब time period कहाँ से आता है, ये तो बेटा ओमेगा टी, दिस वन आवर टाइम, ये ना टाइम पीरियड नहीं बेटा, दिस वन आवर टाइम. ओके, टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं. टाइम पीरियड इज सिंबल फॉर द टाइम पीरियड, कैपिटल टी. एंड टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. कि हमारा एक ऑसिलेशन, अगर बॉडी क्या है यहाँ से मीन पोजीशन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद वापस मीन पे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, कि वो भी यहाँ से इधर गया, इधर से वापस इधर आया, और इधर से यहाँ वापस मीन पोजीशन पे आया. जैसे वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो यही क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड होगा. सो यू कैन से बेटा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन, कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन जितने भी टाइम में कंप्लीट करेगा टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. कि अपना कंप्लीट ऑसिलेशन जितने भी टाइम में कंप्लीट करेगा उसी को क्या कहते हैं, हम टाइम पीरियड कहते हैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 365 डेज. कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ अपना कंप्लीट एक राउंड कितने दिनों में कंप्लीट करती है बेटा, 365 दिनों में कंप्लीट करती है. और 365 दिन होने के बाद अर्थ क्या अपना फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देती है. वो घूमते घूमते, जिसकी वजह से क्या बनते हैं हमारे विंटर समर बनते हैं. ओके, और स्पिन करती है तो हमारे क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं. अर्थ दो टाइप से करती है, एक तो रिवॉल्व करती है, एक स्पिन करती है. जब अर्थ स्पिन करती है तो क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. ओके, और जब अर्थ रोटेट करती है तो हमारे क्या है, डेज चेंज होते हैं, विंटर समर, लाइक दिस वन सीजन विल बी देयर. तो हमारा क्या है, अर्थ भी सन के चारों तरफ क्या 365 दिन में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है. अर्थ का जो टाइम पीरियड हुआ वो क्या हुआ, 365 डेज. अंडरस्टूड. टाइम पीरियड क्या होगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन विद इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज योर टाइम पीरियड ओनली. सो टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ आवर 365 डेज. फॉर एग्जांपल क्लॉक है, क्लॉक क्या करती है, 1 घंटा कंप्लीट 60 सेकंड के बाद क्या है, अपना फिर से राउंड स्टार्ट करती है, सेकंड निडल. ओके, तो 60 सेकंड के बाद फिर से अपना राउंड स्टार्ट करेगी, तो 60 सेकंड क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड हुआ, जो अपने आप को क्या है, फुल ऑसिलेशन करती है कितने टाइम में, दैट इज टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होती है, सेकंड ही होती है, बट टाइम पीरियड वी आर यूजिंग डिनोटिंग विद हेल्प ऑफ द कैपिटल टी, एंड टाइम वी आर डिनोटिंग विद हेल्प ऑफ द स्मॉल टी. Now next our term, your wavelength. What is wavelength?
wavelength is length of our one complete oscillation. Okay, so you can say that is wavelength. Otherwise you can say distance between two crust or two trough is known as wavelength. ओके कि अगर आपकी जो कंप्लीट ऑसिलेशन है वेव इक्वेशन, तो इसके अंदर वेवलेंथ क्या हो जाएगी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से आने तक वन वेव कहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी. सो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर, दैट वन कंप्लीट वेव का जो कितनी भी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज द वेवलेंथ. एंड सिंबल ऑफ वेवलेंथ होता है बेटा लैम्डा. व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ? लैम्डा. और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? मीटर. क्योंकि क्या होती है, लेंथ को ही हम मेजर करते हैं और लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में ही यूज करते हैं. टू क्रस्ट एंड ट्रफ, टू क्रस्ट, वन क्रस्ट इज देयर, वन क्रस्ट इज देयर, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या रहेगा? लैम्डा रहेगा. टू ट्रफ इज देयर, सो डिस्टेंस हियर that also will be lambda. This one distance will remain same only. So we can say distance between your crust and trough and your length of one oscillation also your wavelength only. Its unit will be meter and that we will denote with symbol of lambda only. Next will be your frequency. For frequency we will use this one symbol nu. We will call it nu. Okay. So number of oscillation. What? Number of oscillation. Number of oscillation within 1 second, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. दिस वन फॉर एग्जांपल कि हमारी वेव कैसे चल रही है, 1 सेकेंड में इतना चली. ओके, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ऑसिलेशन taken by this one wave within 1 second. So count how much oscillation will be completed from here to there, one oscillation. Now here to there second, 3, 4 and this one your half. Okay, so till here within 1 second completed 4 and half. So we can write there 4 by 0.5, that is frequency, and unit of this one will be hertz. But hertz will be SI unit of the frequency. So like this one we can measure their frequency कि कोई भी आपकी वेव है वो कितना वाइब्रेट कर रही है, यानी ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग हाउ मेनी वाइब्रेशन विल बी टेक प्लेस विद इन 1 सेकेंड, देन वी विल कॉल इट फ्रीक्वेंसी. एंड देयर डिफरेंट रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी देयर. देन वी कैन राइट देयर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड में बोल देते हैं. सो हियर फ्रीक्वेंसी in form of the time period we can write there 1 by t. Then second inverse also SI unit of our frequency. Second inverse भी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की SI unit होती है. फ्रीक्वेंसी होता है inverse of the time period. So second inverse unit of the frequency and hertz also unit of the frequency. Next our angular frequency. Angular frequency क्या होती है? That is your omega only. Omega is our angular frequency in form of the angle how much change is there oscillation will be take place. So omega, relation between your omega and nu, then we can write there omega equal to your 2 pi nu. This is the relation between angular frequency and linear frequency. Second, for the time period we can write there omega equal to 2 pi by t. I hope you understood beta what is the relation between them. अगर क्वेश्चन में आ रहा है then omega is given your general equation, then you have to find out time period frequency. So how you can find, relate these terms, then using this one terms then we can find there. Okay, so angular frequency, your SI unit of the angular frequency, then it will be radian per second. This one will be SI unit of angular frequency. Now for example here we are taking let a oscillation of SHM is y equal to your 0.24 sin 2 pi t. Okay, plus 5 we have not done, that's why we are leaving this one. So here this only.
sine 2 pi t. Okay, so using this one equation, let an oscillation of the SHM is equal to this one. Then find amplitude, your frequency, and time period. These terms we have to find out. Okay, so how we can find, beta, this equation is given, then find this term. How we can find? First we will write the general equation of the SHM. ये आपको given equation है, आपको SHM की general equation लिखनी है. How we can write there? So we have to solve this one by using, as we know, we discussed already the general equation of your SHM, y equal to a sine omega t. Okay, this one our general equation of your SHM. As you will compare this one with this equation, then we can find their given terms. So this one given in meter, so all terms are will be in SI unit only. That's why as we will compare, so this one will be equal to your amplitude, this one your y equal to a is amplitude, so this one term will be amplitude. So amplitude we can write there, amplitude of SHM will be equal to 0.24 meter. Sine function is there, then omega t, here written 2 pi t, means omega is equal to here 2 pi only. So given in our question omega equal to here 2 pi. ओमेगा क्या गिवन है? 2 पाई गिवन है. उसके बाद कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी. अब हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी. एज वी नो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू यार 2 पाई. ये रिलेशन पता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? म्यू इक्वल टू यार ओमेगा बाई 2 पाई. सो ओमेगा वी कैन राइट देयर, omega equal to your 2 pi as given in our question, 2 pi by 2 pi. Okay, so 2 pi by 2 pi cancel with each other, then here will left your 1 hertz. So this our frequency. Clear? After that you have to find out time period. अब हमें पता omega equal to your 2 pi by t, यही होता है टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड. तो हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है. तो सो फॉर टाइम पीरियड of SHM in simple harmonic motion, t we can write there 2 pi by omega. Okay, 2 pi by omega. Time period we can write there 2 pi by omega. Omega is equal to, we can write there in our question 2 pi. So 2 pi. Time period also will become here 1 second. This one our time period. I hope you understood beta how we can find amplitude, frequency and time period. So here one more relation of the lambda also left. If here you have to find out lambda, then lambda how we can find beta? For the lambda relation you have to should know about this one relation of this lambda. Here wavelength lambda is there, okay, and frequency relation. So relation between them will be equal to nu equal to your b by lambda. How you can this one? Because we know about this one, velocity equal to your displacement by time. Displacement by time na, in form of the wave. For wave x will be converted into lambda. X is length only, so this one we can write there lambda. T is we can write there in form of the time period. So velocity we can write there, velocity equal to your lambda by time period. Okay, so if we are writing here then 1 by t we can write there frequency. Clear? So frequency we can write there lambda is equal to v by frequency. V क्या हमारी velocity है, velocity of that particle which is moving, and this one nu will be your frequency. अगर particle क्या है, light particle है, EM wave particle है, so speed will be convert for EM waves. For EM waves, velocity will be converted into c, that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So for this one condition, then lambda we can write there c by mu. This is the relation and
These are the some characteristics oscillatory motion. Then in next class we will find the displacement, velocity, acceleration during SHN. So understood this one? Then thank you for watching today our video.